अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद में तमाम सुनने वालों को आरजे मुस्कान का प्यारा सा महकता सा चहकता सा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपके नज़दीक कोई भी दुख और परेशानी है तो हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस दुख और परेशानी को आपसे दूर कर दे। तो फैसलाबाद यू आर लिसनिंग द प्रोग्राम ड्राइव टाइम विद आरजे मुस्कान। मेरा और आपका साथ जो है वो 6 बजे तक हुआ करता है और इस साथ में हमेशा से मेरी ये कोशिश रहा करती है कि आपसे कुछ सीखा जाए, आपको कुछ सिखाया जाए और इस खूबसूरत से साथ को मज़ीद खूबसूरत जो है वो बनाया जाए। तो फैसलाबाद हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है ड्राइव टाइम के नाम से, आप वहां जाकर भी हमें सुन सकते हैं और फॉलो करके हमारी खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी अपडेट है हमारे प्रोग्राम के हवाले से आपको वहां पर जो है वो मिलती रहेगी। फैसलाबाद आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2025। आज का दिन है दैट इज़ थर्सडे जुमेरात और आज 4:09 हो चुके हैं। वी आर बिट लेट। आज मैं लेट नहीं आई थी लेकिन फिर भी मैं लेट होगी, लेकिन इट्स ओके। आपको भी इस चीज़ के बारे में अडॉप्टिव हो जाना चाहिए कि मैं जो है अपना प्रोग्राम 4:10 तक ही शुरू करती हूँ। बेशक मैं जितना मर्ज़ी जल्दी आ जाऊँ लेकिन ये एक रिचुअल बन चुका है जो मैं तोड़ना नहीं चाहती। तो आपने जो है वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ख्याल रखने के साथ साथ आपने भी इस प्रोग्राम में मेरा देना है भरपूर साथ। उठाना है फ़ोन, हमारे स्टूडियो का नंबर दैट इज़ 0334196696 0334 1966 आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। फैसलाबाद आज आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला जो है वो भी लिया जाएगा क्योंकि पिछले माह हम काफ़ी मसरूफ़ रहे और हमारा प्रोग्राम का जो एक टाइम पीरियड था वो भी बहुत कम था। लेकिन इस माह मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल्स लूँ और आपको इस शो में अपने साथ एंगेज कर सकूँ। और साथ ही साथ अक्टूबर का मंथ हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत फेमस होता है और साथ साथ हमारी FM 96.6 के लिए भी बहुत ख़ास होता है। ये आपने बताना है क्यों ख़ास है और इस FM के लिए क्यों ख़ास है और FM को कितने साल हो चुके हैं। अब तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, जो पुराने लिसनर्स हैं जो हमें काफ़ी सदियों से सुनते आ रहे हैं उनको पता होगा कि अक्टूबर का मंथ जो है वो क्यों ख़ास है। और फैसलाबाद ये मौसम जो है वो हमें बदल रहा है कम्प्लीटली तरीके से। हमें ख़ुद नहीं समझ आ रही होती कि हमें फ़्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो आपने इस मौसम में अपना बहुत बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखना है। अपने आप की जो इनटेक है उसको पूरा रखना है। अपने आप को जो है वो बाहर किसी ज़रूरत के बगैर किसी ज़रूरत के आपने बाहर नहीं जाना और साथ साथ आपने कहवे का इस्तेमाल करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है अगर आपको फ़्लू है, खांसी है, बुखार है। और अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत है तो यू विल हैव टू मेक श्योर करें कि आप जो है वो किसी भी करीबी मुआलिज के पास जाके अपना मुकम्मल इलाज करें क्योंकि ये टाइम है कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आपका जो है वो बलगम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। अगर आपके घर में स्टीमर है तो आपने विक्स डाल के वो स्टीम करना है या लौंग डाल कर आप स्टीम कर सकते हैं। वो भी आपके अंदर के रेशो को जो है वो अच्छी तरह से कह सकते हैं ख़त्म कर सकता है। फैसलाबाद बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ आदि जो हैं वो हमारी डेली लाइफस्टाइल से बहुत मैटर करती हैं। अगर हम डेली लाइफस्टाइल में बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारी सेहत और हमारी डाइट बहुत अच्छी है तो ही हम इस अपनी सेहत को बहुत अच्छे तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ राग़िब कीजिए। तो फैसलाबाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपसे करेंगे मज़ीद बातें, लेकिन हम चलते हैं शो के बहुत ही खूबसूरत ट्रैक की तरफ and we'll be right back after this beautiful track. सुनते रहिएगा Wave FM 96.6 with आरजे मुस्कान। Welcome to another episode of Knowledge Connect. In today's episode, we'll be discussing about biotechnology, breakthroughs and beyond. We are highly thrilled that Dr. Shaista Shafiq, who's the head of Department of Biochemistry and Biotechnology, is joining us today. Dr. Shaista will be sharing her insights and expertise on biotechnology research, innovation and education, and the impact that is generating on the society.
Let me share something about Dr. Shaista Shafiq. She is also the head of Environmental Society at TUF. She is the member of Standing Committee, Industry Linkage at Chamber of Commerce, Faisalabad. She is the Manager Innovation and Commercialization at ORIC, TUF. She is the member of Biotechnology Society of Pakistan. She is also the member of American Society of Microbiology. She is the member of European Federation of Biotechnology. Let's welcome her today and let's hope for a wonderful conversation with her. Assalamu alaikum, ma'am. Thank you so much, Dr. Shaista, for joining in. It's lovely having you. Thank you so much, Zama, for inviting me over and giving me a chance. This is a beautiful opportunity for me to talk about my department, about biotechnology, and what we are doing here and what we are offering at TUF. Yeah, it's kind of pleasure having you here. For the very first, starting point, I really want to know how your journey has been at TUF. Such a beautiful question to begin with. Yes, it's been now around 3 years since I've joined TUF as head Department of Biotechnology, and my experience working here at TUF is been remarkable. Because the day I started TUF, it was my department's first day also. Oh, so okay. it is like my baby, if I can say this, and it's so great seeing it nurturing and developing so big. Initially, when we started, we had our postgraduate program along with undergrad program, but now we are offering our PhD degrees along with MPhil programs also. Wonderful. So it's great seeing it growing this good, and all the best wishes for the department and the students who are part of this journey with me. Definitely. That's actually wonderful to know. And since you talked about that, it's literally like a baby to you. I want to know, that what degree programs you're offering and how you are leading your baby. What's the vision behind it? Yes, we offer BS, MS, and PhD in biotechnology, and our BS program is for 4 years, and MS program is for 2 years, and PhD is for 3 years. Here, I would like to mention one thing, that our postgraduate programs, when we talk about our MS and PhD biotechnology programs, that are based on weekends. So yeah, 2 days program where our coursework we do on Saturdays and Sundays, and rest third and fourth semesters onwards they continue their research. But our undergrad program is all during the weekdays, as the other universities do. Yeah. Since there is MS program, there is PhD, there is BS program as well. I want to know what are the key focus areas of your department, and how the biotechnology is advancing, or how it's being applied. I want to know that, how it's working out. It's sometimes with the different disciplines in one universities. Sometimes people think that biotechnology is about a technical degree, maybe they associate it mistakenly with the IT, maybe IT technology or something like that. But biotechnology is where you get to work with manipulation of DNA and with genome. So not only that, when we work with microorganisms, so all together we are thriving different set of tools and techniques just to manipulate DNA if we have to, and we work on proteins also just to serve mankind in a best possible way. So biotechnology's applications are not only confined in one area in particular, it actually offers its services in industrial sector,
and in agriculture, in environment, and in health sector also. So we offer such a dynamic or diverse tools and techniques that you can actually use to manipulate genomic DNA, or you can use microorganisms in any way to develop new protocols or to re-establish the processes to produce some good antibiotics, to food, to vitamins, to biofuel, biodiesel, some vaccines. The applications are enormous. Yes, and coming back to your question that what is the focus of our department, then I would like to mention here that that is not about एनीथिंग कि हम कहें कि हाँ ये चीज़ हमने कभी पहले अपने शो में डिस्कस की होगी। काफ़ी दफ़ा हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस की है, लेकिन उसके डिफरेंट पहलू डिस्कस किए हैं। ये प्रोग्राम जो है वो हमने नहीं डिस्कस किया। तो फैसलाबाद आज का जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है वो दरख्त की वो ऐसी छाँव होने वाली है जिस दरख्त की छाँव में जाकर हर कोई बैठता है और उस छाँव से हर चीज़ वो हासिल करता है, दुआएं हासिल करता है, कामयाबी का रास्ता हासिल करता है और अपने बहुत सी खूबसूरत यादें जो हैं वो उस दरख्त से लेता है। बेशक वो दरख्त आपको मुश्किल वक्त में आपके लिए एक साया है, गर्मी में आपके लिए एक साया है, आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए, आपको हर्डल से बचाने के लिए एक कह सकते हैं एक स्मूथ पाथ है। तो फैसलाबाद आज का जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू होने वाला है वो बुज़ुर्गों पे होने वाला है। 1 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल्स मनाया जाता है, जिसको हम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन कहा करते हैं। वो लोग जो कि हमारे मुल्क के बुज़ुर्ग हैं उनका ये दिन मनाया जाता है। दिन मनाने के लिए हम बहुत से दिन मना सकते हैं। मदर्स डे है, टीचर्स डे है, फादर्स डे है, ओल्डर पॉपुलेशन है, लेकिन फैसलाबाद देयर इज़ अ ईयर ऑफ चेंज। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हम एक रास्ते एक दगड़ पर नहीं चल सकते। अब यहाँ पर हज़ारों सेलिब्रेशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पिछले साल से जैसे चलता आ रहा है, जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर्स हैं, उनको अडॉप्ट किया जाए, बल्कि हमें तब्दीली लेकर आनी है। हम क्या करेंगे, हज़ारों रुपया अपने फ्लेक्सिस पे लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जिनका वो दिन है उनके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है, उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो फैसलाबाद कहाँ पर चेंज लाने की ज़रूरत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने सोचना है, क्योंकि हम यंगस्टर्स हैं। जब तक हम किसी चीज़ को बदलना नहीं चाहेंगे तब तक वो चीज़ नहीं बदलेगी। और हमेशा हमें इनोवेशन पर काम करना चाहिए, नोवेलिटी भी काम करना चाहिए। अगर आप एक ट्रक चलाते हैं या अगर आप एक बस चलाते हैं तो आपको पता होगा कि कितने माइलेज के बाद जो है वो ऑयल चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप इस कंपनी का ऑयल डालेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आपने सफ़र कर कर के सीखी हैं कि अगर हम सफ़र ना करते तो आपको कैसे पता लगना था, आपको कैसे पता लगेगा कि ये गाड़ी का ये वाला गियर सिस्टम अच्छा है, ये वाला ऑयल सिस्टम अच्छा है, क्योंकि आपने उसको आजमाया है। जब तक आपने उसको आजमाया है, समझा है, सीखा है, तभी आप किसी दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि हाँ जी ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आपके पास साइकिल है तो आपको पता होगा कि कौन सी साइकिल की ट्यूब बहुत अच्छी है, अगर आपको पता होगा कि साइकिल पे कौन सी सीट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इस फैसलाबाद ज़रूरी नहीं कि आपका तबका बहुत ऊपर होना चाहिए या आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं सोच सकते, बल्कि आप जिस पर हैं, जो बुनियादें आप बना रहे हैं उस पर भी सोचकर आप इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। तब्दीली तो एक लफ्ज़ की होती है, अगर एक नुक्ता मुँह पर लगा लें किसी भी हरूफ में और उसका मायने बदल जाता है, लफ्ज़ की अदायगी बदल जाती है। और इसी तरह ही अगर हम लफ्ज़ के नीचे एक नुक्ता लगा लेते हैं तो वो भी नुक्ते की अदायगी और नुक्ते का मायने बदल जाता है। तो फैसलाबाद लाइफ भी इसी तरह से है, एक नुक्ते की मानद है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक नुक्ता जो है वो गलत लगा लेंगे तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, और आप ज़िंदगी का एक नुक्ता जो है वो अच्छा लगा लेंगे तो ज़िंदगी जो है वो आपकी बेटरमेंट की तरफ चली जाएगी। लेकिन मैं हमेशा आपको कहती हूँ बदलना आपने है, और हम हमेशा तब्दीली पे बात करते हैं, लेकिन आज के मौज़ूअ गुफ्तगू पे मैं कोई तब्दीली की बात नहीं करूँगी। जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, जो हमारे इंसेस्टर हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजार चुके हैं, हम उनको नहीं बदल सकते।
ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठा कर, अगर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या फिर अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर आप बेटी हैं, बहू हैं, बेटा हैं, या वट एवर योर रिलेशनशिप इज़, आपने इस बात को समझना है कि आप अपने बुज़ुर्गों को नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर मेरे बुज़ुर्ग भी मेरा प्रोग्राम सुन सकते हैं या सुन रहे हैं, वो भी मेरी इस बात से रिलेट करें, क्योंकि उनका तजर्बा बोलता है, उनकी ज़िंदगी बोलती है। अगर हम उनको बदलना चाहेंगे तो वो उनको तसल्ली नहीं मिलेगी कि हाँ इसने मुझे बदला था, मैं तो पहले ही कहता था कि ये तो ऐसे होना था लेकिन ये ऐसे हो गया। तो फैसलाबाद, दिस थिंग कैन ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ। फैसलाबाद, अब जो बुज़ुर्ग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो भी मेरी इस बात से इत्तेफाक ज़रूर करेंगे कि बच्चे जो हैं वो गलतियां बहुत करते हैं। मैं एक बच्ची हूँ और ऐसे हज़ारों बच्चे जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो बहुत गलतियां करते हैं, अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके गलतियां करते हैं। लेकिन फैसलाबाद, आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि हमने गलती भी नहीं करनी और माँ बाप की बात भी माननी, अपने बुज़ुर्गों का लाज भी रखना है। ये सारी कहानियाँ, लेकिन आपने मेरा देना है इस प्रोग्राम में भरपूर साथ और बताना ये है कि आपको क्या लगता है कि बुज़ुर्ग हमारी ज़िंदगी में कितने अहमियत का किरदार अदा करते हैं और बुज़ुर्गों का होना घर में क्या हैसियत रखता है। ये सारी कहानियाँ आपने मुझे बतानी है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं शो के बहुत ही खूबसूरत ट्रैक की तरफ, एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। सुंदरीगा वेव एफएम 96.6 विद आरजे मुस्कान। We currently are focusing on a research which is more towards industrial biotechnology and environmental biotechnology. Since we have this, sustainability, zero waste, innovative directions around, not only in Pakistan, around the globe. And in Pakistan, massively, we need to work on our SDGs, as we all know, sustainable developmental goals. And we have a big gap to actually to work on, to lead on these research work oriented, especially targeting SDGs. So we are thriving our research to introduce some green protocols so that we can actually minimize environmental pollution, and we introduce some cost-effective procedures which are cost-effective already, but also eco-friendly solutions to some of the chemical processes, because the use of chemicals is so huge at the moment, and it is creating, it is actually contributing towards GHG emission, if you know that, greenhouse gas emissions, and it is also elevating the carbon counts in our environment. And we need to seek for some solutions, for some processes which can actually cut off some of the unrequired or this toxic concentration of carbon dioxide from our environment altogether. Yes, and the application of biotechnology is helping us basically to redefine some of the chemical processes which our industries are practicing at the moment. They are producing some very good valuables, but the chemical process they use, it is making the whole environment more polluted. Non-sustainable practices will definitely, it's not a healthier practice, leaving this planet for our generation with so much pollution and infections around won't be a healthy future we can see if we still continue doing the practices we are doing at the moment. Yes. Well, that's a lot to know, that, you know, it's so diverse and there are so many applications, and it's, you know, it has penetration everywhere, I believe. Yes, definitely. So that is why at the Department of Biochemistry and Biotechnology, we are doing our research to treat industrially wastewater. And for that, we are using nanobiotechnology, and through nanoparticles, we are trying to degrade or remove some of the very heavy toxic metals that are present in Faisalabad drains and this water, particularly for toxic heavy elements. If I name them, is chromium,
lead, zinc, such as cadmium. These are some of the heavy toxic elements. Their concentration is way higher than it should be in our air and in our water. So we are doing some of our research to cut down these toxic heavy elements from the wastewater. And because we are using the same water for our irrigation purposes, that is around the Paharang drain that we have in Faisalabad. And the second key area where we are working in our research is utilizing some of the agriculture waste material, and through that we are producing some commercially and industrially important valuable chemicals, just like biopolymers, some resins, some furfural, active carbon, and some So right. Since you were doing so much in terms of for industry to achieve the SDGs goals and everything, I want to know that your department must be collaborating with maybe industries or other institutions, or what are the stakeholders involved in all this extensive process of bringing goodwill to the community and environment? Thank you very much for asking this question. We have the ultimate goal of teaching students is a way to contribute positive back to our society. And all this learning, it's the real outcome, the real goal is to contribute positively in terms of knowledge, and then implying some practices which ultimately helps our generations to come. We are enforcing some of the zero waste and the sustainability. We are enforcing the innovative products to produce some kind of innovative products, but that comes out of cost-effective and eco-friendly green protocols through green synthesis. And definitely, it is not possible even for the public sector universities also to have all the equipments, all the techniques under one roof. It is a way than ideal situations which rarely we observe. So we have to collaborate, and we do collaborate, and we have achieved our research. And recently, I happened to represent Pakistan in Water Energy Nexus in Abu Dhabi, UAE this year. And we presented the work we are doing here on wastewater treatment with the nanobiotechnology. And where we require some kind of particular equipment that we do not have. So we do have a very good lab facilities here at TUF, Alhamdulillah. We have a well-established biotechnology lab in Salim campus and Amin campus also. And but the other, some of the equipments that are sometimes one or two that is available throughout in the city, and they commercially do these samples for all the research students, and that is available to all public universities and private university students. So we do collaborate for that with the University of Agriculture Faisalabad, with the Government College, GC University Faisalabad, and also with NIBG, Pakistan Atomic Energy Commission Institute also. I'm examiner there, and their students, we do examine. So our research students also go there and use some of the equipment if they need be. Right. That's wonderful. Students getting the opportunity to hands-on experience things, I think that enables them a lot. And personally, I've seen you pushing your students a lot, by the way. So I'm a witness to that thing. So thank you for contributing that much towards the positivity and learning of students. No, thank you very much for this beautiful compliment. Yes, I like to work for my students, and to help them, to equip some of the good knowledge, good hand-on experience, and not only that, a man of a character. They should speak well, they should present like a scientific character, and I help them becoming a good professional, and
I'm trying to give them the exposure, the international exposure that I do have. And from that, if they can get benefit, and they are doing so, they are doing very well, alhamdulillah. So I'm very happy with the progress my students are making and the projects they have done. They're going wonderful, alhamdulillah. Definitely because of your support and definitely because of the vision that you're carrying, I must say. Since we're talking about, you know, the research and what students are doing, could you highlight like what are the research projects or, you know, the innovation that Department of Biotechnology is working on? If you could please share that. Yes, because I also run an environmental society at UF, so we have incredible, innovative projects coming on in a few months to come. And yes, we are working on liquid trees and yes, some of the innovative projects already. And we are in the process of exploring these application of nanoparticles to simultaneously target some of these heavy toxic elements that I just mentioned. So yeah, and I'm being invited to deliver a lecture to international PhD and postdoc students abroad. So I will be soon embarking for that international lecture soon, inshallah. So there I will be teaching the same procedure and protocols that we are using here to treat the industrial wastewater here, because Faisalabad is an industrial hub, and many industries, particularly garment industries, are around, and some of the wastewater or their effluent, not only that contain the dyes, different dyes, and the other toxic elements, and sometimes their pH is just so acidic, which is making it more complicated for scientists to degrade some of the complex dyes or ingredients that they use. We know, Zama, that water is a universal solvent, and now it is becoming an issue that it dissolves each and everything almost, so except the organic substances. So it is definitely a challenge, not only in Pakistan, around the globe, to treat water, because in 2050 we think that water scarcity would be the biggest issue to handle and to address. We scientists are foreseeing that we won't have clean water in years to come if we keep wasting our water and we keep polluting our water. Very recently, I happened to join a WWF Pakistan platform, and where we discussed all the present scenario with our wastewater in Faisalabad particularly, and there are very good international projects in Faisalabad through the Australians are running, where the use of ablution water are being considered for the irrigation agriculture practices, which is going to be very good. Yes. Right. Well, thanks a lot for sharing these insights. We were not aware of it. And, you know, thank you for increasing our knowledge, I would say. I want to know that, you know, mashallah, your department is doing so much. You are doing so much in terms of, let's say, awareness and innovation and research. Is there any particular notable research or project that you could please share or highlight? Yes, some of our research projects were on treatment of wastewater, as I mentioned, and along with that, we are producing some chemicals like furfural and bioresins, biopolymers, and through green synthesis.
these chemicals are there and we import them, and we spend quite heavy amount of money to export these chemicals in Pakistan, and then different industries, they happen to use that for their own products and manufacturing purposes. But the thing is, the chemical process that is involved for the production of these chemicals we are talking about, they're very expensive. Right. And then these chemicals, the production of these ingredients, they use such rough chemicals. Sometimes very high acids and concentrated bases are used to produce these valuables. So we are actually shaping the processes. We are trying to cut the chemical process through biological processes. We are making use of microorganisms so that we can degrade the ingredients and minimize the use of chemicals to produce these valuables. So for that, we are focusing to use on the agriculture waste material. My students, they work on rice husk, and wood shavings, like from the furniture markets, the wood shavings sometimes, because they are of no great use. So we use that to produce these viable chemicals, viable compounds, and using the green synthesis. And since we are aware that we have to minimize and we have to apply the policy of zero waste, so it is going to be very helpful in future if we could explore these potential processes or pathways through which we can actually minimize their effect on the carbon count and GHGs. Right. Since you talked about the impact, let's discuss now, the impact of all the research and the work that is being done. How do you see that its impact is being reflected on the environment, or let's say on the society, or on the human health? Beautiful question, I must say. Thanks for asking this. Academically, what we do explore, what we do discover at this stage, if you allow me to say, we publish. Academically, that contribution is a must also, I should say. So we publish, and our papers, our research experiments, whatever the results we have actually remarkable results out of all this, the application of nanoparticles. We publish in peer-reviewed international journals, and my students' work have been published, and the publications are there. They happen to write some of a very good chapters in international books, in Springer books. So the impact is reflected this way. But that is academic contribution to knowledge. But if you talk about the practical side of it, and commercialization, yes, my students, we are actually in negotiation with two of the industries, and we are communicating with them for exploring their effluent and the application of these nanoparticles, what we have explored in controlled conditions in our environment. And then we want to do it a little bit on, scale up experiments with these industries. So two industries are there, and we really appreciate their cooperation and yes, their initiative to come up front and talking about their problems. And I appreciate that, because in society we all are stakeholders. So what we are teaching, what our students are conducting research on, ultimately it is going to be beneficial for the industrial processes, because they are doing the research, or they are actually manufacturing or producing these chemicals at a large levels. So ultimately this is going to impact our society big times if these green synthesis, green practices are embarked and they are taken wisely and timely. I think it's very important that somebody at your position is realizing the importance, plus taking the steps to actually bridge the gap between academia and industry,
and then taking on the steps to impact the society positively in terms of realizing that it's I must say impacting your that environment. as this awareness is very important, that our society, the parents of our students, and the Yes. other professionals in in other departments other than sciences, I must Yes. say, they should also know that what we have done to our environment and what is the current situation with our natural resources when we talk about water, when we talk about our air. Yeah. So we must know what we are actually, the quality of water we are taking in, and how we have to save our water. Yes. And खुश आमदीद फैसलाबाद, यू आर लिसनिंग द प्रोग्राम ड्राइव टाइम विद आरजे मुस्कान। तो फैसलाबाद आज आपकी जो है वो लाइव कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। हमारा शुरू का नंबर है 0334 19 66 9 66। हमें जो है वो अमजद शाह साहब की कॉल आई थी ऑफ एयर, जिन्होंने हमें 201 रेबे से ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया सर आपका। सलीम की कॉल आई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया हमें ट्यून इन करने के लिए और हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। फैसलाबाद टुडे आज हमारा जो मौजू गुफ्तगू है वो बुज़ुर्गों पे होने वाला है। और बुज़ुर्ग जो होते हैं वो घर के लिए एक दरख्त की मानिंद होते हैं कि अगर उस घर में बुज़ुर्ग नहीं होते तो कहा जाता है, और इस चीज़ पर हम भी यकीन रखते हैं कि उस घर में नेमतें नहीं आती। लेकिन जिनके बुज़ुर्ग किस दुनिया से चले गए हैं, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। लेकिन जिनके पास ये अनमोल ख़जाना है, उनसे ये गुजारिश है कि इस अनमोल ख़जाने की जितनी हो सकता है कदर करें। अगर आपके माँ बाप बीमार हैं तो आपको ये भी चाहिए कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है। वो लोग जिनके पास ये मौका नहीं मिलता, जिनको ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कर सकें, तो मेरा ख़्याल है कि उनके पास नेकियां समेटने का मौका नहीं होता। तो अगर आपके पास ये मौका है, आपके घर में कोई बीमार है, कोई वालिद कोई वालदा बीमार है, तो आपको चाहिए कि उनके साथ नरमी से पेश आएँ। एंड द मेन थिंग जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ों की वजह से बच्चों में लड़ाइयाँ जो है बहुत आम होती हैं। अगर घर में नई नई शादी हुई है तो ये तो बहुत ही एक लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है कि लड़ाइयाँ तो होनी ही होती हैं। लेकिन फैसलाबाद अगर हम यंग जनरेशन हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने एक तवील अरसा गुजार चुके हैं, उनको हम बदल कर क्या ही करेंगे। वो अपना 50-60 साल का अरसा गुजार चुके हैं और अभी हम अब उनकी आधी उम्र की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। उनका तजर्बा, उनको लोगों को देखने का नज़रिया, उनके पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग हैं, और वो अभी तक उन लोगों को देख कर यहाँ तक जो पहुँचे हैं, उनका ज़ाविया, उनका व्यू बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हम जहाँ पर ये तब्दीली, हम हर चीज़ की तब्दीली की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अब ये होता है कि हमारे माँ बाप गांव में रहते हैं, हम पढ़ने लिखने की खातिर उनको गांव से शहर ले आते हैं, लेकिन वो उस माहौल में अडॉप्ट ही नहीं कर सके जहाँ पर उन्होंने क्या सुबह 5-6 बजे उठना होता है, मॉर्निंग वॉक करनी होती है, खालिस चीज़ें खानी होती हैं। वो शहर में वैसी चीज़ें उनको नहीं मिलती, उनको हर चीज़ शहर के मुताबिक अडॉप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो फैसलाबाद आपका बुज़ुर्ग, आपके बुज़ुर्ग जो आपके घरों में रहते हैं, वो आपका ख़जाना है। उस ख़जाने को आपने जो है वो किसी दूसरे को नहीं देना। उनका ख्याल रखें, जब तक आपके साथ वो ज़िंदगी में मौजूद हैं तब तक उनके साथ लाड प्यार से, मोहब्बत से ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों को सुलझाने की कोशिश करें, ना कि लड़ाई झगड़ों में, तब्दीली में और उनकी बातों को दिल पर लेकर अपने दिलों में नफ़रत डालने की ज़रूरत है। बल्कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि उन्होंने एक अरसा गुजार लिया है, अब उस अरसे को बदलते बदलते हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें। तो हमेशा प्यार से, मोहब्बत से चीज़ों को सुलझाएं, जानें, समझें कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसमें हम लैक करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। हमें अपने बुज़ुर्गों से बात करने का तरीका नहीं पता। हम क्या करते हैं, अगर हमारा बुज़ुर्ग हमारी कोई बात नहीं मान रहा तो हम शाउट करने लग जाते हैं, आपने ऐसे किया, ये किया, वो किया। तो फैसलाबाद कॉम्प्रोमाइज़ एंड कमिटमेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने बुज़ुर्गों से प्यार से, मोहब्बत
मोहब्बत से, तहम्मुल से, सब्र और इस्तकामत के साथ उनसे बात करें, अपना मसला शेयर करें, उनसे उनका मसला पूछें और इस दिन को यादगार बनाएं कि वाकई अगर हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमने ख़ुद को बदलना है, उनको नहीं बदलना। अगर कोई घर में नया फ़र्द आता है तो वो पूरे घर को नहीं बदल सकता, बल्कि उसने ख़ुद को बदलना है उस फैमिली में एडजस्ट करने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मर्द हज़रात को भी समझनी चाहिए, ख़वातीन को भी समझनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखती हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन की है। अगर वही हमने लड़ के झगड़ कर दूसरों को बातें सुना के गुजारनी है तो हम क्या याद रखेंगे ज़िंदगी गुजरने के बाद? सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रतें। तो ज़िंदगी जो है उसको गुलजार बनाने का यही तरीका है कि खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें और जहाँ हो सकता है चीज़ों को एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करें। तो फैसलाबाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपसे सुनेंगे, आपसे नहीं मुझसे सुनेंगे मज़ीद बातें और कहानियों को मज़ीद हम रंग देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं शो के बहुत ही खूबसूरत ट्रैक की तरफ। एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। सुनते रहेगा WFM 96.6 विद आरजे मुस्कान। You know that how much disastrous situation we are in at the moment. We are facing a massive flood problem in Pakistan. So the climate is changing, climate is evolving, temperatures are elevating, and living in Faisalabad is now looks like living in Jacobabad and Sibi. But because of the greater use of solar systems, making it more harder or making it more warmer for our people who live in Faisalabad, they will agree. So where that technology is there, the massive use of any technology can have some negative impacts also. So the way we are consuming solar light, solar energy at this massive level, it is contributing to warming our climate. And now the situation where we are not considering the saving of our water, and now sometimes the rains, we can actually in globally the rainwater, the rain tank are there to save even the rainwater. So we need to explore some of best agriculture practices, and you know, to think about planting more trees to combat such climate disasters that we are facing today, unfortunately. True. I'm dead sure that the society that you are heading, I know personally that initiatives and your society has taken for, I think, Earth Day and environmental initiatives. I appreciate your preparation for the background we have. No, that's Thank because you. Somebody is highlighting it and creating the awareness. It's very, I think it's vital, and usually people do not realize its importance. But it's great that since you are somehow associated with the field, but you're trying to create the awareness throughout for the community and the society. That is something positive, and I truly, genuinely appreciate that. Thank you. Since you are creating awareness, you are working on research, you are working with the industrial collaborations, you are mashallah working with Thank you so much. Thank you. With the collaboration with other departments and all. I really want to know now that how you are training your students, and how you are making them the professionals who are able, trained, and mashallah aware as well. Very good question, and thank you very much for your generous appreciation. I'm humbled and grateful for your words. Thanks a lot. Yes, preparing our students, preparing them at an international level is